Good evening, everyone. In this lecture, we will talk about Section 8586 Indian Penal Code, that is intoxication. 85, 86 इकट्ठे इसलिए पढ़ने पड़ते हैं because दोनों ही intoxication की बात करते हैं. That is, at the time of doing an offense, person was under the spell of intoxication, thereby doesn't know the nature and consequences of his act, or what he's doing is either wrong or contrary to law. 85 में it is involuntary intoxication, that is without his knowledge, against his consent, without his knowledge, ignorance, against his consent, forced, coerced. 86 में it is voluntary intoxication. And 86 is not generally applicable, it is applicable only in those cases where the offense requires particular intention or knowledge, and court shall presume the presence of knowledge, since it is a voluntary intoxication case. सोहन मानी स्टेट ऑफ बिहार, वन ऑफ द लैंडमार्क केस जो डिफाइन करता है व्हाट डज इंटॉक्सिकेशन vis-a-vis 85, 86. It must be of such a level of intoxication where there is a loss of mental equilibrium and thereby loss of self control. इस तरह इस लेवल का इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, नॉट इंटॉक्सिकेशन किया एंड देयरबाय गिव वे टू वायलेंट पैशन रेडिली एंड क्राइम कर दिया, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 85, 86. नो, it must be of such a level that there is loss of mental equilibrium, there is loss of self control. Sohan Mani, state of Bihar. We get to Glanville Williams का एक अच्छा सा लेक्चर है या फिर पैरा है that why intoxication को एज अ डिफेंस हमने क्यों अलाउ किया. Because एक person who is normally acting responsibly, if under the spell of intoxication behaving irresponsibly, this act must be taken as an aberration and he must not be treated equally as of a habitual offender, since अगर हम ऐसा करेंगे it would amount to injustice. So इसी ग्राउंड पे 85, 86 एक्सटेन्यूएटिंग फैक्टर्स बन गए हैं. 85 तो एब्सोल्यूट, 86 रिलेटिव. आपको रिबट करना है नॉलेज को जो कोर्ट प्रिज्यूम करके बैठी हुई है. सो विदाउट नॉलेज अगेंस्ट विल की हमने बात कर ली है. लॉस ऑफ ME समझ गए होंगे, मेंटल इक्विलिब्रियम. SC सेल्फ कंट्रोल. सोहन मानी ही स्टेट ऑफ बिहार. सो 85 इज वेरी क्लियर. लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इतना था, उसे कुछ नहीं पता. He doesn't know the nature and consequences of his act, physical consequences, not the penal consequences, and doesn't know what he's doing is either wrong or contrary to law. Now always remember, persuasion and the act is done means the act is done with consent. Persuasion is not against will. Forced coerced में नहीं आता persuasion. Without his knowledge तो सीधा ignorant आ गया ना, बंदा सो रहा है नींद में. now हम बात करते हैं 86 की. Self-induced intoxication, if allowed as a defense, it would be like a license to the offenders to commit crime with impunity. Jojo versus State of Kerala. Hence, voluntary intoxication is not allowed as a defense, even if intoxication is of such a level that person doesn't know the nature and consequences of his act, is avoid or what he's doing is either wrong or contrary to law. चाहे उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसका लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन 85 जैसा ही है, बट क्योंकि उसने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की है, खुद शराब पी है, नहीं देंगे हम उसे डिफेंस. However, we always read 86 with 84 voluntary intoxication, but of such a level कि person insane ही हो गया है. अब डिफेंस 84 का मिलेगा उसे. बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सी, वन ऑफ द लैंडमार्क केस ऑफ 86. हम इसके फैक्ट्स थोड़ी देर में पढ़ेंगे. अब क्योंकि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी हर केस में 86 अप्लाई नहीं होगा, इट अप्लाइज ओनली वेयर द नॉलेज और इंटेंशन रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल मर्डर, द एक्ट इज डन विद नॉलेज और विद इंटेंशन, तो इसमें नॉलेज प्रिज्यूम कर लेगी. अगर फैक्ट्स कह रहे हैं तो इंटेंशन भी प्रिज्यूम हो सकती है. 114 इंडियन एविडेंस एक्ट. सो नॉलेज को रिबट करना है अक्यूज्ड ने अपने डिफेंस में. सो हम बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू की बात कर रहे थे. रिटायर्ड मिलिट्री पर्सोना वेंट टू अ मैरिज पार्टी, आस्क्ड अ चाइल्ड टू गिव हिम वे टू सिट इन द चेयर, बट child refused. He took out his gun
whipped out a pistol, shot the boy. He died, and that military personnel went to bus stop and attempted to escape that place. बट क्योंकि पिंड वाले उत्थे पहुंच गए and he was caught. He asked for forgiveness. Means दिख रहा है, though he was under intoxication, but his level of intoxication is not satisfying Sohan Mani. He was a state of Bihar ka test, loss of mental equilibrium and thereby loss of self control. उसे पता है वो क्या कर रहा है. So once knowledge presume हो गई है, facts ऐसे intention भी presume हो सकती है. So this is all about intoxication. On अर्लियर स्टैंड की बात करें जो आईपीसी 1860 आने से पहले था, वो ये था कि a person who commits crime under the spell of alcohol intoxication, he should be punished when he is sober. ये अर्लियर टाइम का स्टैंड था. Just sharing this light fact. Thank you.